हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल। एंड आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ दैट हैज हैपेंड इन द मार्केट और कैसे वो फर्दर अफेक्ट करेगी। सो लेट्स स्टार्ट एंड डिस्कस अबाउट द न्यूज़ इन डिटेल। जो पहली न्यूज़ आज हम कवर करेंगे दैट इज इन हेल्थ केयर एरिया विद ग्लोबल इम्प्लीकेशंस। सो रिसेंटली यूएस ने इंट्रोड्यूस किया है बायोसिक्योर एक्ट, जो कि एक लॉ है जो बेसिकली स्ट्रेंथन करता है कंट्री की रेडीनेस अगेंस्ट बायोलॉजिकल थ्रेट्स। बट अब इसका इंडिया के लिए क्या मतलब है? तो ये एक्ट फोकस करता है ऑन इंश्योरिंग द क्रिटिकल ड्रग्स एंड मेडिकल सप्लाईज आर सोर्स डोमेस्टिकली इन द यूएस। अब ये इम्पैक्ट करेगा इंडिया के फार्मा एक्सपोर्ट्स को, स्पेशली इन द सेक्टर्स वेयर यूएस वांट्स टू बूस्ट लोकल प्रोडक्शन। और इंडिया एक ग्लोबल प्लेयर है जेनेरिक ड्रग्स में, और इस मूव की वजह से जो उसका मार्केट शेयर है यूएस में वो टेम्परेरीली कम हो सकता है। हाउएवर इंडिया की फार्मा इंडस्ट्री काफी बड़ी और डाइवर्स है। कंपनीज एक्सप्लोर कर रही हैं नए मार्केट्स एंड दे आर ट्राइंग टू फोकस ऑन एडवांस्ड ड्रग्स एंड वैक्सीन्स, जिसकी वजह से इस इम्पैक्ट का एक ऑफसेट हो सके। एसेंशियली ये एक चैलेंज है, बट इट्स ऑल्सो एन अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया, जिससे कि वो इनोवेट कर सके और स्ट्रेंथन कर सके अपनी ग्लोबल पोजिशन को इन द हेल्थ केयर स्पेस। And now let's move to the second news, which is in the world of cryptocurrencies, where we are seeing that the market experienced one of the worst sell-off in the history of crypto. And here we are seeing that $19 billion वाइप आउट हो गए इन अ सिंगल डे, और इसकी वजह से अफेक्ट हुए अराउंड 1.6 मिलियन ट्रेडर्स। एंड ये काफी मैसिव ड्रॉप था जो कि हुआ है बिकॉज ऑफ द न्यूज कि 100% टैरिफ्स लगे ऑन इंपोर्ट्स फ्रॉम चाइना। एंड इसकी वजह से काफी पैनिक हुआ ग्लोबल मार्केट में। बिटकॉइन, इथेरियम और काफी बड़ी क्रिप्टो करेंसीज में एक बहुत मेजर डिक्लाइन देखने को मिला है। एंड ड्यू टू दिस मेनी इन्वेस्टर्स आर रीथिंकिंग देयर पोजीशंस। अब ये एवरीडे इन्वेस्टर्स के लिए इसलिए मैटर करते हैं क्योंकि क्रिप्टो करेंसीज काफी ज्यादा वॉलेटाइल होती हैं, और इस टाइप के जो इवेंट्स हैं ये दिखाते हैं कि कैसे एक क्विक प्राइस चेंज हो सकता है इन इवेंट्स की वजह से। वाइल कुछ लोग इसको एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं बिकॉज ऑफ द डेप्थ, एंड कुछ इसमें कॉशन लेने का सजेस्ट करें बिकॉज क्रिप्टो मार्केट्स कैन स्विंग ड्रामेटिकली इन रिस्पॉन्स टू द ग्लोबल न्यूज विच वी हैव सीन राइट नाउ। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट द आईपीओ मार्केट, where we are seeing two major IPOs in the spotlight, Tata Capital and LG Electronics. सो बेसिकली टाटा कैपिटल का आईपीओ एक मॉडेस्ट जीएमपी द ग्रे मार्केट प्रीमियम के साथ है विद ₹7, जिसमें दिखता है कि एक रिलेटिवली स्टेबल लिस्टिंग हो सकती है। ऑन द अदर हैंड एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स में वी आर सीइंग अ जीएमपी ऑफ अराउंड ₹395। एक काफी स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टर इंटरेस्ट और एंटिसिपेशन देखने को मिल रहा है स्टॉक के डेब्यू में। एंड द डिफरेंस हाइलाइट्स इन्वेस्टर सेंटिमेंट। टाटा कैपिटल का आईपीओ एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इट वुड बी स्टेडी, बट एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इज जनरेटिंग अ लॉट ऑफ एक्साइटमेंट। And now let's move on to the corporate news from BLS International, where we are seeing the shares of BLS International tumbled up to 18%. अब ये जो डिक्लाइन था ये मेजरली इसलिए था क्योंकि कंपनी को डीबार कर दिया गया है फ्रॉम सम ऑपरेशंस टेम्पररीली। ऑल्दो ये क्लैरिफाई किया गया कि जो ऑनगोइंग कॉन्ट्रैक्ट्स हैं और ऑपरेशंस हैं ये पूरी तरीके से अनअफेक्टेड हैं, बट ये ड्रॉप हमें रिमाइंड करता है उन इन्वेस्टर्स का दैट आर reacting on the short-term news of the regulatory action that can cause stock price fluctuation and fluctuate sharply, even if the underlying business remains strong. और ये काफी important lesson है that we should remain informed, not react impulsively, and watch how companies respond to these challenges. And finally, we have a news from the power sector of Reliance Power, where we are seeing again a strong stock movement over the weekend. अब इस डिक्लाइन की वजह से इसमें जो डिक्लाइन हुआ है मेजरली इसलिए हुआ है कि अशोक कुमार पाल ने स्टेप डाउन किया है एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एंड सीएफओ ऑफ द कंपनी। लीडरशिप चेंज की वजह से इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं अफेक्ट हुआ है, एंड दिस वाज रिफ्लेक्टेड इन द स्टॉक मूवमेंट एज वेल। कंपनी के लिए काफी क्रूशियल टाइम है टू मेंटेन कम्युनिकेशन विद शेयर होल्डर्स एंड इंश्योर बिजनेस कंटिन्यूटी, एंड इन्वेस्टर्स के लिए इट्स अ रिमाइंडर टू वॉच बोथ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस व्हेन मेकिंग द डिसीजंस। And now to summarize all the updates, we covered the news about the US BioSecure Act, which could affect India ka pharma export, cryptocurrency market को upsell largest in the history,
टाटा कैपिटल और एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स आईपीओ के बारे में जो भी स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टर इंटरेस्ट अभी चल रहा है मार्केट में बीएलएस इंटरनेशनल के और रिलायंस पावर में जो स्टॉक मूवमेंट देखने को मिला है. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. I hope this video helped you to understand these updates clearly and easily and see why all this matter for investor, businesses and everyday consumers. So thank you for watching our video and don't forget to like, share and subscribe for more such updates and stay tuned and have a great day ahead.